डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक सक्सेस पॉइंट। लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि सर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड एक वीडियो बना के अपलोड कीजिए। तो मैंने सोचा आज के वीडियो में हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द वीडियो, क्योंकि फिर वीडियो लेंथ बढ़ जाती है एंड इट बिकम्स बोरिंग टू वॉच। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज एट एवरी पॉइंट अलोंग द एग्रीगेट डिमांड कर्व, ऑप्शन ए दैट इज y is equal to c plus i plus g plus nx is the करेक्ट आंसर। क्योंकि हम जानते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व के हर एक पॉइंट पे जो हमारा y दैट इज नेशनल इनकम वो किस बराबर होता है, किसके बराबर होता है? c दैट इंडिकेट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर, i इंडिकेट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, g इंडिकेट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड nx इंडिकेट्स नेट एक्सपोर्ट्स दैट इज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज an increase in consumption at any given level of income will lead to, कोई भी इनकम लेवल अगर हमारा रहता है तो अगर उस इनकम लेवल पे हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है उससे क्या होगा? दैट विल लीड टू एन increase in the aggregate demand. Therefore option A higher aggregate demand is the correct answer. Next question that is the aggregate demand is, हम जानते हैं कि aggregate demand is the total quantity of an economy's final goods and services demanded at different price levels. इसमें जो ऑप्शन ए है उसमें इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पे मेंशन किया है, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। दूसरे ऑप्शन में दैट इज बी ऑप्शन में इसमें भी इंटरमीडिएट गुड्स को मेंशन किया गया है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में फाइनल गुड्स है लेकिन यहाँ पे इसने पर्टिकुलर प्राइस लेवल को मेंशन किया है, बट वी नो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमीज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द correct answer. Next question that is the transaction demand for money is a function of, हम जानते हैं कि according to J.M. Keynes people hold money for three motives. नंबर एक मोटिव जो है दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, नंबर सेकंड प्रिकॉशनरी मोटिव, नंबर थर्ड स्पेकुलेटिव मोटिव। जो नंबर वन दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव दैट रेफर्स टू डिमांड फॉर मनी फॉर कंडक्टिंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस। और अगर हमारा मनी इनकम बढ़ जाता है तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी आल्सो इंक्रीजेस। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो इसमें फिर सेकंड मोटिव आता है दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव, दैट मीन्स डिजायर ऑफ पीपल टू होल्ड कैश बैलेंसेस फॉर अनफॉरसीन कंटिजेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ एंड इट इज रिलेटेड टू द थर्ड मोटिव ऑफ the demand for money. Speculative demand अगर हम कहे simply it refers to desire of the holder to keep cash balances as an alternative to financial assets like bonds, securities, etc. तो अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है उससे क्या होता है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स विल फॉल, दैट मीन्स डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव बिकम्स लेस एंड वाइस वर्सा, दैट इज द इंटरेस्ट रेट and speculative demand for money are inversely related. Therefore we can say speculative demand for money is a function of interest rate. Option B is the correct answer. Next question that is an increase in aggregate demand when the economy is operating at full capacity is likely to result in, हम जानते हैं कि जो full capacity है that is also known as potential GDP, or it is also we can say the maximum quantity that an economy can produce given full employment of its existing levels of labor, physical capital, technology and institutions, or we can say it occurs when all available resources are used
efficiently. अगर हमारी full capacity level पे aggregate demand increase होती है, we can say then aggregate supply is unable to increase any more, then it is the price level only which will increase. Therefore we can say option D, an increase in the overall price level but no increase in output is the correct answer. Next question, that is a movement up a given aggregate demand को is the result of, जो हमारा aggregate demand को रहता है, यहाँ से हम aggregate output को measure करते हैं, यहाँ से हम price level को measure करते हैं, and moments are caused due to the change in price level. तो अगर हमारा moment up आ जाता है, for example that the moment will be the reason for the moment along the demand curve will be a rising price level, that means option A is the correct. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, that is a movement down an aggregate demand को results from, इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं. that means here the correct answer is a decrease in the level of prices. Next question, which of the following factors are responsible for the downward slope of aggregate demand curve? And the options are rate of interest effect, real balance effect, which is also known as wealth effect, foreign trade effect. और हम जानते हैं कि all the three factors are responsible for the downward slope of aggregate demand curve. Therefore, option D, all of the above is the correct answer. Next question, that is change in the value of exports due to the change in the general price level is called. और हम जानते हैं कि change in price level produces three effects, that is real balance effect, interest rate effect and foreign trade effect, and the change in the value of exports is known as foreign trade effect. That means option A, foreign trade effect of the change in price level is the correct answer. Next question, that is related to a diagram. The aggregate demand curve in the following graph will shift from AD1 to AD0, and the options are the output level increased, the price level increased, net taxes decreased, money supply decreased. हम जानते हैं कि the aggregate demand curve shift upwards or downwards due to the चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स. और यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है, जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज आउटपुट लेवल इंक्रीज्ड. हमारा आउटपुट लेवल जो है इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू द चेंज इन price level. That means option A is not the correct answer. Next option, that is price level increased. When the price level changes, it causes moments along the demand curve. Therefore option B is also not the correct answer. Net taxes decreased. अगर हमारे net taxes जो है कम हो जाते हैं, they will cause the aggregate demand curve to shift rightwards. That means option C is also not the correct answer. अगर हमारा सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होता है तो उससे क्या होगा कि द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड्स. हियर वी आर सेइंग द AD1 कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड्स. देयरफॉर वी कैन से ऑप्शन डी, द मनी सप्लाई डिक्रीज्ड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज related to the same diagram. In the same graph above, the economy would move from point A to point B along the AD0 curve if, यहाँ पे हम देखेंगे ये बता रहा है कि अगर इकोनॉमी में the economy will move along the aggregate demand curve AD0 from point A to B. That means कि अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करेगी, दैट मीन्स देयर विल बी चेंज इन द प्राइस लेवल. क्योंकि यहां से हम एग्रीगेट आउटपुट को मेजर करते हैं और यहां से हम प्राइस लेवल को मेजर करते हैं. दैट मीन्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B मीन्स मोमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व एंड मोमेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस लेवल. दैट मीन्स हम यहां पे बोल सकते हैं कि option B, that is the price level fell, is the correct answer. Next question, that is if aggregate demand
falls short of current output, it would result in, that means कि if aggregate demand is less than the aggregate supply, वहां पे क्या होगा? ऑप्शन ए, business firms will cut production to keep from accumulating inventories. Accumulating simply means get together, or we can say to acquire an increasing number. और inventory हम जानते हैं कि all items, or we can say all goods and services which are held by business for selling in the market to earn a प्रॉफिट. जब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम होगा तो बिजनेस सेक्टर जो है वो अपना प्रोडक्शन कम करेगा, क्योंकि he will not be willing to accumulate more and more inventories. Therefore option A is the correct answer. Next question, that is at potential GDP change in aggregate demand brings changes only in. हम इसको शायद क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Therefore no need to discuss here again. It is option A, price is the correct answer. Next question, the aggregate demand curve shifts to the right when, यानी कि जो हमारा aggregate demand curve है वो towards the right कब शिफ्ट होता है? हम जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को में यहाँ से हम एग्रीगेट आउटपुट को मेजर करते हैं, यहाँ से हम प्राइस लेवल को मेजर करते हैं, एंड द चेंजेस इन द प्राइस लेवल काज मोमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व, एंड द चेंजेस इन नॉन प्राइस फैक्टर्स विल result in the shift of the aggregate demand curve. The money supply increases. अगर money supply increase होता है then the aggregate demand curve will shift towards right. Net exports increase. अगर हमारे exports increase होते हैं उससे भी हमारा aggregate demand curve जो है rightward shift होगा. Taxes are increased. अगर हमारे टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो उससे हमारे एग्रीगेट डिमांड को में शिफ्ट आएगा, बट दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड्स. देयरफॉर ओनली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट. दैट मीन्स बोथ ए एंड बी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Next question, which of the following does not cause the aggregate demand curve to shift to the left? Moments along the demand curve हमने previous question में discuss करे. यहाँ से हम aggregate output को measure करते हैं, यहाँ से हम price level को measure करते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि the factors which will not cause the aggregate demand curve to shift to the left, मतलब left shift किससे नहीं आएगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि a decrease in net exports, अगर हमारे exports decrease होते हैं तो उससे left shift आ जाएगा. A decrease in government spending, अगर government spending कम हो जाती है that will also cause the aggregate demand curve to shift to the left. A decrease in taxes, अगर हमारे taxes जो है decrease होते हैं तो उससे क्या होगा? Aggregate demand curve will shift towards right. And option D, that is a decrease in price level. A decrease in price level will cause a moment along the demand curve, not a shift. Therefore we can say option C, a decrease in taxes is the correct answer. Next question, that is according to the monetarists, an increase in money supply, other things equal, shifts the aggregate dash curve to the dash. इसका जो correct answer है that is demand and right. That means कि shifts the aggregate demand curve to the right. Next question, that is the Keynesian analysis of aggregate demand indicates that changes in money supply. According to the Keynesian view, वो क्या कहते हैं कि when there are changes in the money supply, सबसे पहला have no effect on aggregate demand curve. This is not the correct answer. Shifts in the aggregate demand curve is the opposite direction of change in government spending. ये भी उनका view नहीं है. Shifts the aggregate demand curve in the same direction as the change in government spending. This is the correct answer. Option C is the correct answer. Next question, that is related to the Keynesian view regarding the aggregate demand curve. That is according to the Keynesians, a decrease in government spending, other things equal, shift is the demand curve to the left. Option B is the correct answer. Next question, that is according to the Keynesians, an increase in taxes, other things equal, shift is the demand curve to the left is the correct answer. Option B is the correct answer. Next question, that is Keynesians believe that the demand curve is downward sloping. A change in the quantity of money
causes the aggregate demand curve to shift. Changes in government spending and taxes do not cause the aggregate demand curve to shift. But according to the Keynesians, changes in government spending and taxes will cause the aggregate demand curve to shift. Therefore, option C is not correct. Only option A and only option B are correct. That means both A and B. Option D is the correct answer. Next question, that is Keynesians believe that changes in government spending and taxes cause the aggregate demand curve to shift. Option A is the correct answer. Next question is that is regarding the average propensity to consume. The formula for calculating average propensity to consume is that is equal to C upon Y, that is consumption upon Y. Next question, the formula for calculating marginal propensity to consume is, and it is always calculated by delta C upon delta Y, that is change in consumption due to change in consumption due to the change in income. Next, that is related to the concept of multiplier. हम जानते हैं कि जो concept of multiplier that was first developed by F.A. Kahan in early 1930s, but the Kahan's multiplier that was known as the employment multiplier, because that multiplier was with reference to increase in employment, direct as well as indirect, as a result of initial increase in investment and employment. Then finally J.M. Keynes propounded concept of multiplier with reference to the increase in total income, direct as well as indirect, as a result of investment and income. And the Keynesians multiplier is known as investment or income multiplier. So here is the correct answer is F.A. Kahan, क्योंकि the first the concept of the multiplier was first developed by F.A. Kahan during 1930s. Next question, that is the formula for calculating investment multiplier is, और हम जानते हैं कि जो investment multiplier है वो हम कैसे calculate करते हैं, delta Y by delta I, that means change in national income upon change in investment. Next question, that is according to Keynesian's multiplier model, the value of MPC is 0.75. then what would be the value of multiplier? हम जानते हैं कि according to the Keynes, the value of multiplier is equal to 1 upon 1 minus MPC. So here we have to calculate 1 upon 1 minus 0.75 and the value will be equal to 4. You can calculate by using your calculators. So the correct answer, that is option A, 4 is the correct answer. Next question, that is related to the aggregate supply. Aggregate supply means, that means simply we can say the total quantity of final goods and services offered for sale at different price levels. So option C is the correct answer. Next question, that is the aggregate supply curve shows the relationship between the price level and the level of aggregate output supplied. Therefore we can say option D is the correct answer. Next question, in the long run the aggregate supply curve will have a slope. हम जानते हैं कि जो हमारा aggregate supply curve रहता है, long run aggregate supply curve, यहाँ से हम aggregate output को measure करते हैं, यहाँ से हम price level को measure करते हैं, and it is always parallel to the OY axis, or we can say parallel to the price level axis. That means its shape is vertical. Next question is along a given aggregate supply curve, an increase in the price level leads to an increase in aggregate output because, क्योंकि according to the question, along a given aggregate supply curve अगर हमारी price level में increase होता है तो aggregate output भी हमारा increase होता है. क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन यह है कि when there is increase in the price of goods and services, firms will increase their production to increase their profits. Therefore we can say option A, firms increase production in response to higher profits, is the correct answer. Next question, the long run aggregate supply curve
is, it is, so we can say it is a vertical line which is a vertical line through the natural rate of output. हम जानते हैं कि जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को है उसमें हम क्या कहते हैं कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रियल जीडीपी. अगर आपको थोड़ा सा वहां पे याद होगा दैट वी से इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन रियल जीडीपी एंड price level, and when real GDP is equal to the potential GDP, that is why we are saying it is a vertical line through the natural rate of output. Because जो हमारा GDP potential GDP होता है that indicates the natural level of output, that is known as which occurs when all available resources are used efficiently. Therefore we can say option C is the correct answer. Next question, that is in the classical theory the aggregate supply is, the aggregate supply curve is, हम जानते हैं कि that is vertical straight line. Therefore option B is the correct answer. Next question, that is in the Keynesian theory the short run aggregate supply curve is, हम जानते हैं कि according to the Keynesians जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो पहले हॉरिजॉन्टल होता है, देन आफ्टर अचीविंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इट बिकम्स वर्टिकल. देयरफॉर वी कैन से हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न थ्योरी द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज, अगर आप लोगों को याद होगा अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू रिगार्डिंग द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व द शेप ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग. देयरफॉर वी कैन से ऑप्शन डी इज द correct answer, that is upward sloping. Next question, that is short run aggregate supply curve comprises of three ranges. Alternative name of nearly flat range is, हम जानते हैं कि जो हमारा मॉडर्न जो हमारा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व रहता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स उसका शेप जो रहता है दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग, और इसके थ्री रेंजेस होते हैं. जो पहला रेंज होता है उसको हम नियरली फ्लैट रेंज कहते हैं और इट इज आल्सो नोन एज अल्टरनेटिवली कीनेशन रेंज. नेक्स्ट रेंज दैट इज नोन एज upward range, upward sloping range, and it is alternatively known as intermediate range. Third range, that is highly steep range, it is also known as neoclassical range, or simply you can say classical range. And the question is related to the nearly flat range, that means it is related to the first range and it is alternatively known as Keynesian range. Therefore we can say option A, Keynesian, is the correct answer. Next question, that is the long run supply curve, the long run aggregate supply curve is, that is vertical straight line. अगर आपको याद होगा यहाँ से हम aggregate output को measure करते हैं, यहाँ से हम price level को measure करते हैं, and it is always parallel to the OY axis, or we can say parallel to the price level axis, and its shape becomes vertical. Therefore we can say it is option D is the correct answer. Next question, that is the long run aggregate supply curve is a vertical line passing through. अगर आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये चीज डिस्कस करा है कि व्हाट इज नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट, व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी, और वी कैन से फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी, तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज the long run aggregate supply curve is determined by, it is determined by the quantity of capital stock, availability of labor, state of technology. That means all of the above is the correct answer. Next question, the long run aggregate supply curve is vertical because it is again related to the potential GDP. Therefore we can say that potential GDP does not vary with प्राइस लेवल. ये हमने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, नो नीड टू डिस्कस अगेन एंड अगेन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिजल्ट्स इन a shift in the long run aggregate supply curve, and the options are change in the stock of capital, progress in technology. Both the factors are responsible for shift in the long run aggregate supply curve. Therefore we can say option C is the correct answer. Next question, the long run macroeconomic equilibrium occurs at the
प्राइस लेवल वायर। जैसे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि इट ऑकर्स वायर द demand intersects the supply curve. Similarly, in macroeconomic equilibrium, it occurs at the price level where aggregate demand intersects long run aggregate supply curve. Option A is the correct answer. Next question. According to the classical economists, those who are not working, according to the classical economists, those who are not working have chosen not to work at the market wage. Next question. Crowding effect refers to a decrease in, that is option B, investment spending caused by an increase in the interest rate is the करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा। आने वाले दिनों में हम कुछ और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।